औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुनीरा असलम टीचर BHSS यूनिसो से हम पढ़ने जा रहे हैं आज कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल टिश्यू के हम पार्ट्स पढ़ रहे हैं। हमने पहला पार्ट पढ़ा सिंपल परमानेंट टिश्यू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल टिश्यू हमने क्या देखा उसमें कि सेल्स आर मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स। कम्प्लेक्स टिश्यू क्या है? टिश्यूज मेड अप ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स। जो कम्प्लेक्स टिश्यू है उसमें काफी सेल्स टिश्यू जो है काफी सेल्स का बना होता है। सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। वो जो सेल्स है वो कोऑर्डिनेट करती है, नहीं तो वो डिफरेंट टाइप्स की बनी होती है, मगर वो कोऑर्डिनेट करती है ताकि स्पेसिफिक फंक्शन वो परफॉर्म करे। एग्जाम्पल हम लेंगे जाइलम और फ्लोएम की। इनको हम टुगेदर वी कॉल जाइलम एंड फ्लोएम वेस्कुलर बंडल्स और कंडक्टिंग टिश्यूज। अब हम पहले पढ़ेंगे जाइलम क्या होता है। जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट इंक्लूडिंग लीव्स। जाइलम जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर फ्रॉम रूट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट इंक्लूडिंग लीव्स। दे आर मोस्टली कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स। जाइलम जो होता है वो दे कंस्टिट्यूट डेड सेल्स। Elements made up of xylem. There are 4 different types of elements. They are tracheids and vessels, xylem parenchyma and xylem fibers. Number 1 is tracheids and vessels. They are elongated structure with tapering ends. वो आप फिगर बुक से देखेंगे, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 184 से फिगर देखेंगे इन सब की। जो ट्रैकेट्स है वो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स है और उनमें टेपरिंग एंड्स होती है। दैट मीन्स दे आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। दे कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली। दे कंडक्ट वाटर एंड मिनरल वर्टिकली, मतलब वाटर और मिनरल्स जो है वो पाए जाते हैं वर्टिकली। Then next is xylem parenchyma. They are living cells and they store food and conduct water sideways. प्लांट को वाटर खाली वर्टिकली नहीं ज़रूरत होता है। प्लांट में लीव्स होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, उनको भी पानी चाहिए होता है। इसलिए जो जाइलम पैरेन्काइमा है वो कंडक्ट वाटर करती है साइडवेज। Then we have xylem fibers. They support the plant. They are dead cells. Tracheids and vessels, xylem parenchyma, they are living cells, but xylem fibers are dead cells. They only support plant. Then we have phloem. Phloem क्या होता है? Phloem हमें पता है, we know फूड फोटोसिंथेसिस जो होता है उस वो किस लिए होता है? फूड प्लांट मैन्युफैक्चर देयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फूड इज स्टोर्ड इन द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज and this glucose is converted to sucrose and sucrose is transported from leaves to other parts of plant. That is phloem. अब phloem क्या है? Phloem transport food from leaves to different parts of plant. जो food store होता है in leaves में in the form of glucose, फिर glucose is converted to sucrose and sucrose is transported from leaves to other parts of the plant. Phloem are living cells except phloem fibers. Phloem fibers जो है वो dead cells है, जैसे कि xylem fiber है, तो बाकी जो इसमें phloem में है वो living cells है। Elements, it is made up of
are sieve tubes, companion cells, phloem parenchyma and phloem fibers. What are sieve tubes? They are tubular cells with perforated walls. Perforated walls means they have small pores that transport food to different parts of the plant. Then we have companion cells. They are specialized parenchyma cells. They regulate metabolic activities of sieve tube elements. That means sieve tubes along with companion cells, they are called conductive elements of phloem. Conduction elements of phloem. Sieve tubes along with companion cells. And then next is phloem parenchyma. Phloem parenchyma supports sieve tubes and also stores compounds like starch. Then we have phloem fibers. They are dead cells and gives mechanical strength to the plant. This is phloem. Phloem क्या होता है आप? They transport food from leaves to different parts of the plant. They are living cells except phloem fibers. Elements made up of phloem क्या है? Sieve tubes, companion cells, phloem parenchyma and phloem fibers. Then we differentiate between xylem and phloem. Xylem और phloem में क्या difference है? जो xylem है वो यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब फूड वगैरह वाटर एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है, जो कि फ्लोएम है वो बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट करता है दोनों तरफ से, आप नीचे से ऊपर भी और साइडवेज भी. They transport water and xylem transport water and minerals from roots to aerial plant parts. From roots to aerial plant means upwards. And in phloem, they transport food and nutrients from leaves to different plant parts. And xylem are dead tissues at maturity. जब वो mature हो जाते हैं तो वो dead tissue बन जाते हैं. While as phloem are living tissues except phloem fibers. Xylem occurs at center of vascular bundle, while as phloem occur on outside of vascular bundle. Now we differentiate between simple tissue and complex tissue. What is the difference between simple tissue and complex tissue? Simple tissue occurs, they have only one type of cell, while as complex tissue different types of cells are present. In simple tissue, they occur in all parts of plant. Complex tissue occur in vascular region. They perform variety of functions. Simple tissue perform variety of functions, while as complex tissue they perform only conduction. Examples of simple tissue are parenchyma, collenchyma and sclerenchyma, while as complex tissues are xylem and phloem, also called as conduction tissue. Significance of xylem. There are two main significance of xylem. One is transport or conduction, and the other is animal rings or bark of a tree helps us to tell the age of a tree, and that branch of science is known as dendrochronology. It helps us to determine the age of the plant. Thank you.